Hello, I am Dr. Ashish Garg. I am a critical care specialist from Chandigarh. So I'll be talking about two myths about patients on ventilator. Is ventilator always a death sentence? Is there never any hope for recovery? कि अगर हमारा मरीज वेंटिलेटर के ऊपर है तो क्या उसकी मृत्यु निश्चित है? नहीं. This is a myth. So while the patient on ventilator is always a sign of serious illness, हमारा मरीज जनरली बहुत सीरियस है तभी डॉक्टर ने हमें कहा है कि हमारे मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत है. But it does not always mean that our patient will die. Now, please understand, if the reason for which the patient was put on ventilator, for example, if our patient had very serious lung infection and if that infection has been taken care of, or for example, patient with drug overdose, if that drug overdose has been taken care of, these patients can be very easily weaned out of the ventilatory support and in future go on to live a very fruitful and a long life. In general, patients on ventilator, the recovery rate is varies from 20% to 50%, depending on the various factors like the seriousness of illness, the duration on ventilator, other comorbidities, age of the patient, and so forth. Myth number two: ventilator is a treatment. Ventilator gives cure to your patient. Please understand, ventilator is a life support system which provides temporarily breathing or respiratory support to your patient. वो आपके मरीज का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, वो तब तक आपके मरीज को सांस की सपोर्ट दे रहा है जब तक बीमारी के कारण आपका मरीज अपने शरीर की सांस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा है. और जैसे जैसे आपका मरीज ठीक होता जाता है, आपका आईसीयू डॉक्टर वेंटिलेटर सपोर्ट कम करता जाता है, मरीज खुद से सांस लेता रहता है और फाइनली वेंटिलेटर को उतार दिया जाता है. थैंक यू.